shirt. Yes. And good to see you, Rishabh, after a long time. Lovely meeting you. Absolutely. So it's wonderful to be able to have this conversation with you. And whenever I see you, I get overexcited. I'm like, the guy who supported us in the first year is back again in the 10th year. So it just makes life even more pleasant. So it's very nice, very good to be able to see you, sir. You don't need any introduction. You don't need any introduction, but No, I need introduction to the new generation because and Karan, I'm just going to read out what Karan Johar has said, that Subhash Ghai is looking dapper. He's also watching the live, but let me just quickly introduce you to all the young Gen Z and millennials who are watching this. This man is the original Khalnayak who made many Ram and Lakhans into Yuvrajs. The man whose cinema made you feel at home even in Pardes. And from the era of black and white to being the hero on whose Taal the whole world danced. Some call him as the founder of Mukta Arts. Others know him as the chairman of Whistling Woods International. But I know him as a man who, I must say, 10 years ago, I don't know whether, sir, you remember this. I was 18 years old. My hair was even worse than what it looks today. I came up to you and I said, 18, 19, I came up to you and I said, sir, हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के बारे में लोगों को पढ़ाने वाले हैं, हम लोग भारत के बारे में लोगों को पढ़ाने वाले, and you asked me saying, are you doing it? And sir, no name, no surname, you just didn't ask for a bio data. All you said, if you are doing it for young people, you are also so young, so I will support you. Ladies and gentlemen, boys and girls, from 10 years ago, one of the people who supported the organization right from the start, Subhash Ghai. Please put your hands together for the man himself. Thank you, Rishabh. So welcome to Parul University presents I.I.M.U.N's role model series. Let me start by asking you. Yeah, I would like to request you, please. I would like to request you to please let me know the series of your question so that I can answer them precisely. So let me start with the first question. So you didn't have any person in Indian cinema who was guiding you. You made it by yourself. So I've read your stories. Your journey is well documented. But how does a young person become from ordinary? How does he go to extraordinary? How do you add the little bit of extra in your life, especially when you don't have a name and a surname and yet want to make it large in something as difficult as Indian cinema? See, right from my childhood, I remember my mother, when I was leaving home at the age of 14, 12, that time I was a very protected child. But when she told me, now you are grown-up child, and now you have to take care of yourself. So take care of yourself is normally heard in every family. आपके सब माँ बाप सब लोग यही कहते हैं, take care. Am I right? But we have never taken this line seriously. Take care of yourself. And when you start taking of oneself, so it is only the self. It is your life. It is your thoughts. It's your body. It's your face. It's your mind. Irrespective to which family you belong to, which university you study, which kind of friends you are having. You are Rishabh. I am Subhash. That's it. So Subhash is a self. Rishabh is a self. So whatever name you have been given by the society or your parents, it is yourself. You are born creative. You have heard people. You have heard the virtues and values. You have seen the disturbance and nonsenses. You have experienced all positive and negatives. So, can somebody influence you? No. Who can influence you is positivity. If negativity is influencing you, then you are going down. And moment positivity is influencing you, you are going up.
this much if you know it. And I learned only this thing. That's it. That is the secret of the whole journey. You can see from ordinary boy, from a college while doing BCom, going to FTI, becoming an actor for 3 years, then a writer for 4 years, then the director for 5 years, then opening a company like Mukhtar's with a curse, then making a 12 hits constantly, then went for the corporatization. Then I now set up the film school like Whistling Woods. So one line is take care of yourself. I always took care of myself. It sounds that selfish means no. Selfish is you have to be selfish. And if you are not selfish, you are not taking care of yourself. And selfish means does not mean the hurt other people and grow. Support the people and get the support from the people and then grow. When you support the people, you get the support. If you want people to love you, you have to love them. If you want people to respect you, you have to respect them. If you have people to help you have to help people. Because this is all self. ये मेरे अपने रूल हैं सेल्फ मोटिवेशन के कि मुझे अपने लिए दूसरे को अच्छा रहना है, मुझे अपने लिए ही सब चीजें लेनी है. So sir, जैसे आपने बताया that पहले अपने लिए जीना सीखना पड़ता है, then automatically then you can go and help society at large. Correct. And that's how people. My mother used. Yes, and I asked one day same question to her. How would you define the world called success? She told me that first success comes to you through your hard work, through your clear thinking, clarity of thoughts, and clarity of your choosing profession, right? And clarity of interacting with the people and family. This is the first thing. Once you get a success in your profession or business, then you contribute from your business to help others. When you contribute your wealth and knowledge to others, that is called a success. Not that you only store for yourself and खुद ही जीते जाओ, खुद ही बैंक नंबर बढ़ाते जाओ और दुनिया की ऐसी कैसी. No. When you help others, you can afford to help others. That is why you are successful. Otherwise, you are not. Sir, your definition of success I really liked. You said that if you are able to help others, then you are truly successful in life, and that is Yeah. that is what should be your mantra, sir. But talking about success and failures, sir, success के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं. खुद की सक्सेस के बारे में सर वो there are other people who talk. I can ask you very candidly and frankly because sir it's you. Sir, failures जो होती है सर, उससे सीखना, we learn so much more. सीखने को बहुत कुछ मिलता है फेलियर से. सर, इन योर लाइफ आपने तो इतना कुछ देख लिया है. सर, व्हाट इज दैट वन इंसिडेंट इन योर लाइफ जहां आपको लगा कि ये मतलब दिस वाज अ फेलियर एंड देन यू हैड टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट? ऐसे कभी आपके साथ हुआ दैट देयर वाज अ लो और अ डाउन इन लाइफ एंड देन यू हैड टू पिक योरसेल्फ अप फ्रॉम देयर? Yes, I must share with you one of my incident. When after passing my graduation in BCom, and I was in theater, I worked very hard on theaters, and then I joined FTI. When I joined FTI Pune for 2 years and learned acting course and other cinema technique, I came to Bombay. And trust me, when I came to Bombay, because I'm a Delhi, I did not know even an accountant of the film industry unit. I did not know anyone. I was just a stranger from a different town entering into Bombay. And I remember that I had little confidence that I'm a good actor, a good artist, and I have a diploma now training, so I can go to the producer. So one day, after waiting for 1 month, I went to the studio to meet producer. I went to Gurudat studio Andheri with my diploma and my photographs in my bag. And there was a gate, He says, क्या है? मैंने बोला सर मुझे अंदर जाना है किसी प्रोड्यूसर को मिलने के लिए या शूटिंग देखने के लिए. तो उसने बोला कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं विस्लिंग वुड FTI से आया हूँ, मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ. तो उन्होंने बोला आप किसी को जानते हैं? मैंने बोला मैं किसी को नहीं जानता, मैं जान जाऊंगा, आप मुझे जाने दीजिए अंदर, मैं किसी को जान पहचान निकाल लूंगा.
बोले मैं आपको अंदर नहीं ले सकता, और उसने मेरा मुंह के ऊपर गेट बंद कर दिया। और उसके बाद मैं 15 मिनट तक उस गेट के सामने खड़ा रहा। गाड़ियां आई, गाड़ियां चली गई। गेट खोलता था, मुझे देखता था, फिर बंद करता, फिर देखता था, फिर बोलता जाओ जाओ भाई घर जाओ, यहाँ बॉम्बे में कुछ होने वाला नहीं है, जहां से आया वहीं चले जाओ। He said that. I came back home. I was staying with my cousin, and I started thinking, I'm nowhere, I'm failed, and I cannot succeed in this industry. आर्टिस्ट तो मैं तब बाद में प्रूव करूंगा जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मेरा तो कांटेक्ट भी नहीं। एंड ही सेड कि अपने अपने घर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, यहाँ क्यों अपना सिर पटक रहे हो। दैट टाइम आई रिमेम्बर आई स्लेप्ट, आई हैड टीयर्स इन माय आईज, एंड आई थॉट आई फेल्ड। बट व्हेन आई गॉट अप आफ्टर 2 hours, there was a bookshelf. My cousin's bookshelf was there, the room, and I saw a book. Book was written, How to Influence People. It was written by Dale Carnegie. Dale Carnegie book, and I started reading it, and I started learning the life. This is the way you have to make friends and influence. You have to dig your own paths, and from that day, I started socializing, you can say, or starting meeting people. According to me, there is no word called failure. You should never think that it's a failure. You should always take it as a trial and error. Error and trial and error basis. मैंने ट्राई किया, एरर हो गया, गिर गया, फिर ट्राई किया. Why do you take it as a failure? Don't be sad, just laugh it. आप सड़क पार करते करते गिर जाते हैं, है ना? तो जब लोग देखते हैं तो आप अपने झाड़ते झाड़ते आप हंसने लगते हैं. Remember, you start laughing. नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके लोग बोलते अरे अरे कुछ हुआ है क्या? लोगों को बड़ा दुख होता है कि इसको कुछ हुआ नहीं, साले को कुछ न चोट लगती तो ज्यादा अच्छा होता था, हम सिंपैथी दिखाते, जो हॉस्पिटल ले जाते इसको, है ना? तो जी सर, दिस इज हाउ लाइफ इज. फेलियर एंड सक्सेस इज एवरी स्टेप. हर साल, हर महीने, हर दिन होगा आपको. So you have to embrace it as a part of your life, and if you can laugh it out your crisis, on your crisis, you are successful. You are taking care of yourself. you Please have remember. to basically, you have to enjoy life. It is, and you have every success and failure is something that you will learn from. That is, and sir, बहुत बहुत बार मैंने देखा है, आप फॉलो करते हो, रजनीश जी को आप फॉलो करते थे. You follow, I saw your conversation with Sadhguru. I've personally seen all your conversations. Today Karan was watching us, but I've seen all your conversations right from the time. But the idea is, sir, that ये सारी जो conversations आपने की है, it's from your personal belief. I've seen you speak about it also at one-on-one conversation, saying that you are a seeker. So now, after having lived so many years, if you had to advise your 16-year-old, 7, क्योंकि अभी सर सुन रहे सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सुन रहे, तो सर फॉर दो 16, 17, 18, 19-year-olds, आपने स्पिरिचुअलिटी से जो भी कुछ सीखा है, what is the lesson you would give to your own 16, 17, 18, 19-year-old self? I have got 1100 students of 19 years old in Whistling Wood International, my school, and I happen to meet them for the last 10 years, and they keep me young with their questions, and interact them with them friend, not as a chairman, not as a teacher. And I love to talk to them. My whole unit belongs to the youngsters. So we keep talking and chatting. The interesting part is very important. I keep telling my students, एक 60 साल की उम्र, जब 7 साल की उम्र में आपको होश आता है, अच्छा ये है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरा धर्म है, ये दुनिया है, ये है, उस वक्त एक बुक आती है आपके सामने. This book is called Tell Me Why, and there is a 200 series of that book called Tell Me Why, and those books are written only for that age from 7 to 14. Tell me why, and that is called studentship.
स्टूडेंटशिप का मतलब यही होता है कि यू कीप आस्किंग व्हाई दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, एंड दैट स्पिरिट इन यू, दैट क्यूरियोसिटी इन यू, वो जिज्ञासा जो है वो आपको जिंदगी में हमेशा ही टॉप पर ले जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आज भी मैं बोलता हूँ, टुडे इवन आफ्टर वर्किंग 50 years in my industry, I still feel that I am a student. I'm not trying to diplomate. I'm telling you this. I learn from my students because they are so intelligent, they are so well informed, they are so sharp. They start with the video games their life. हम लोगों के पास तो खाली किताब, पन्नों की किताब होती थी। करेक्ट। एंड दे आर सो शार्प। सो मेरी डिस्कशन उनसे चलती है, कुछ मैं चीजें उनको सिखाता हूँ जो कि 1000 years से वैल्यूड चीजें हैं, जो वैल्यूज हैं। बॉडी तो वैसी ही रहेगी, पहले भी इंसान पैदा हुए थे, अभी कोई इंसान घोड़े तो नहीं बने ना डिजिटल आने से। कोई ऐसे पैदा हुआ जिसकी शक्ल घोड़े की तरह हो या घोड़े की तरह बॉडी। तो लाइफ क्लीशे, इंसान सेम रहा है, सेम इमोशन, सेम 9 इमोशन, सेम एंगर, सेम जेलसी, सेम राइवलरी, सब रहेगा और हजारों साल तक रहेगा। टेक्नोलॉजी आएगी, कम्युनिकेशन अलग तरीके से होगा, मोड अलग होगा, बट यू हैव टू बी ए गुड सोल, ए पीसफुल माइंड एंड ए क्यूरियस चाइल्ड। आई एम स्टिल ए वेरी क्यूरियस चाइल्ड, ट्रस्ट मी और नॉट। That is, You have yes. So you the have curiosity is the most important element. You should keep it within yourself and learn from the smallest person. Don't go for the topmost person. छोटे से आप लिफ्ट मैन से सीख सकते हैं, आप उससे कुछ सवाल कर सकते हैं, आप गार्डनर से सीख सकते हैं। डोंट थिंक इसने मुझे क्या सिखाना है। कोई भी आदमी जिंदगी में आपको एक लाइन सिखा के जाएगा। तो मैंने हर एक की लाइन याद में रखी है कि मैंने क्या सीखा है। मैंने यश जौहरी से क्या सीखा है, यश चोपड़ा साहब से क्या सीखा है, ये मुझे याद है और उन चीजों ने मुझे पे किया है। आई हैव लर्न फ्रॉम biggest people and from the smallest people also, because they talk about life. So everybody should be a good learner with their curiosity. Everybody should be a good learner, and you have created an institution for learners as well. But आपने सर आपने जैसे बताया that you can learn from both a watchman and you can learn also from the biggest filmmakers per se. But for the key element is that you should be a curious person yourself. You should keep asking questions: why, how, when. And that's what I really admire about you, sir. That after achieving everything, you are yet so curious that you want to learn from young people as well. Which is why you created Whistling Woods, sir. But what was the thought behind Whistling Woods? Because so many of the people who are at I.I.M.U.N have studied at Whistling Woods, जो अब काम करती संस्था में बाद में और आपके वहां आके पढ़ते, and looking at you, there are universities across, like this university called Parul University. You started filmmaking courses as well. So, sir, what was the thought behind Whistling Woods as a whole? You see, when I started my company in 1978, Mukta Arts with Curse, then I produced, directed, written many films, right from the Curse to Vidhata to Hero to Karma to Ram Lakhan to Sadagar to Khalnayak, Pardes, Taal, Yuvraj, so many films. After making 10, 11 hits, and I introduced 7 stars, different boys and girls, whether it is Madhuri, Manisha, Mahima. So what happened? I was watching in 1995 की बात है, 97 की बात है, कि बहुत से बच्चे मेरे ऑफिस के बाहर खड़े होते थे, बाहर से आते थे, डिफरेंट स्टेट से, और मैं आपको मिलना चाहते हैं साहब। तो मेरे सेक्रेटरी बोलता इतनी लाइन लगी है, मैं किस को बुलाऊं। अब मैं ऑफिस में बना रहा था, तो मैं जब बच्चों को मिलता था तो वो कहते थे, देखिए आप हमारे सिर पे हाथ रख दीजिए, आप तो गॉडफादर है, आपने जैकी श्रॉफ को बनाया, आपने उसको किया, आपने उसको किया, आपने उसको बनाया, और हमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा ये लो हाथ रख दिया, अभी कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। उनको समझाता था मैं, लेकिन उनको मैं जब भी देखता था, क्योंकि वो रोज आते थे, रोज कोई ना कोई भीड़ लगी होती थी। उस टाइम सिनेमा ही था, टेलीविजन था, डिजिटल था, लोग अपना टैलेंट नहीं एक्सप्रेस कर सकते थे, है ना। तो मुझे ये ख्याल आया कि भगवान ने जब इतना पैसा दिया है
एक्सपीरियंस दिया है, नॉलेज दिया है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है नॉर्मली फिल्म मेकर्स करते थे वो स्टूडियो खोलते थे, गुरुदत्त स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, सब लोग अपना पैसा एक्सपीरियंस, ताकि सिनेमा का आगे चलता रहे दौर। तो मैंने तय किया कि मैं अपने पैसे जो मैंने कमाया है आज 20 साल में, वो मैं स्टूडियो में नहीं लगाऊंगा, उसमें मैं एक फिल्म स्कूल खोलूंगा जिसमें कि ऑल इंडिया से ये बच्चे यहाँ आएंगे और इनका कनेक्शन मैं फिल्म इंडस्ट्री से बनाऊंगा। जो टैलेंटेड होंगे, डिजर्व होंगे, उनको इंडस्ट्री में काम मिलेगा। ये थॉट मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं आज भी उसी फ्लैट में रहता हूँ जिस फ्लैट में 90 में था। लेकिन मेरा विस्लिंग वुड जो है, अगर आप देखें, बच्चों के लिए एक ह्यूज अपने आप में कैंपस है जिसमें सब तरह की फैसिलिटीज है। और मेरी सबसे बड़ी सक्सेस जो है वो विस्लिंग वुड से। फिल्में तो बनाई हैं, बनती हैं, ठीक है, और उससे मुझको आज वो बहुत खुश है। और भगवान ने मुझे ये भी दिया कि आज मैं यंगस्टर के साथ टच में हूँ। आज मैं डेली उनके साथ एक डिस्कशन, एक चैट चलता रहता है। अब आप बताइए कि इस उम्र में आने के बाद भी अगर मेरे और 8-10 यंगस्टर रोज रहते हो साथ मेरे, इससे अच्छा बुढ़ापा क्या हो सकता है। वो सर, वो 8-10 यंगस्टर में से अभी एप्लीकेशन मैं भी भेज रहा हूँ सर आपको टू I call you young master Rishabh. No, but sir, the idea that you've created such a beautiful institution to teach students about films, sir. मेरा दूसरा प्रश्न आपको फिल्म्स के बारे में ही था सर। आजकल अभी आप KGF मूवी देख लीजिए, RRR मूवी देख लीजिए सर, ये साउथ इंडियन फिल्म्स जो बनाते हैं, the South Indian cinema that is there, sir, that is also now coming up in a big way. That पहले ऐसा हुआ करता था कि बॉलीवुड की फिल्म्स इंटरनेशनली यूज्ड टू बी सुपर हिट्स एंड यूज्ड टू डिफाइन इंडियन सिनेमा। आजकल ऐसे हो गया सर दैट साउथ इंडियन सिनेमा इज ऑल्सो डिफाइनिंग व्हाट इंडियन सिनेमा इज अक्रॉस द वर्ल्ड। सर, टू दैट एंड डू यू थिंक दैट द टैलेंट ऑफ इंडिया, जैसे आपने बताया दैट विस्लिंग वुड्स का पर्पस भी यही था, एंड सो ऑल्सो द पर्पस ऑफ ऑल दीज फिल्म स्कूल्स अक्रॉस दैट आर नाउ ओपनिंग अप, that the real talent of India for cinema also is outside of Bombay and Delhi as well. That Bombay और दिल्ली के बाहर भी छोटे छोटे गांव में स्टोरीज है, और छोटे छोटे गांव में भी अच्छे कलाकार है और अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। Do you think that is the future of Indian cinema? देखिए, जो बात आपने की कि जो साउथ इंडियन फिल्में भी आज चल रही हैं, उसी जी सर, पहले बात करूंगा। सिनेमा एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल स्मॉल स्क्रीन एंड बिग स्क्रीन बहुत बड़ा हुआ है, खासकर 10 साल में। हर चीज का हमको एक्सपेंशन मिला है। आज हर बच्चा अपने इंस्टाग्राम में अपनी परफॉर्मेंस कर सकता है, दिखा सकता है। पहले उसका कभी चांस नहीं था। पहले एक आइसोलेटेड सिनेमा था और कुछ नहीं था। आज सबके पास है कि मैं किस तरह से मैक्सिमम कितने मिलियंस में व्यूअर्स लेके आऊं। और आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के तो 30, 40, 50 मिलियन भी फॉलोअर्स हैं। आपके हैं कितने? लेकिन मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि जो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, हिंदी सिनेमा हो, ये हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा है, इसको इंडियन सिनेमा। पहले क्या होता था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि जब हम अपनी फिल्में जो है दूसरी भाषा में भी डब करके भेज सकते थे। आज हम अपनी हिंदी फिल्म बना के भी 4 भाषाओं में, 50 भाषाओं में डब करके भेजते हैं। आप सोचिए कि दंगल फिल्म ने 257 करोड़ का बिजनेस किया था इंडिया में, सॉरी 357 करोड़ का, और बाहर किया था 1200 करोड़ का। चाइना में 1 करोड़ का बिजनेस किया था। चाइनीज को हिंदी में थोड़ी था, चाइनीज लैंग्वेज में था। तो आप किसी भी कर सकते हैं। तो नाउ वी आर इंडिपेंडेंट परफॉर्मर, whether I belong to South, I belong to North, I belong to Bombay, I belong to Punjab industry, गुजरात इंडस्ट्री, किसी भी आता हूँ। मेरा प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि 50 भाषाओं में लोग देखें, तो उसमें कलेक्शन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ और ईस्ट है, बिकॉज वी आर ऑल इंडियन। आप वो फिल्में भी देखें, उसमें भी माँ है, उसमें भी भगवान है, उसमें भी धर्म है, उसमें भी वर्चूज है, उसमें भी एक्शन है, उसमें भी मैथोलॉजी है, सब कुछ है। वैसे हमने भी बनाई है फिल्में, हिंदी फिल्में भी बहुत अपने तरीके से बहुत चली है। लेकिन मेरी, जैसे हमारी हीरो फिल्म थी या कर्मा फिल्म थी या खलनायक थी, वो रीमेक करते थे, उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसको बनाते थे।
आज टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि आप डब भी करें तो लोग एंजॉय करते हैं कि हाँ चलो डब फिल्म देख रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। तो ये हमारे लिए भी चांस खुल गया है, हमारे लिए भी एवेन्यू खोला है हिंदी फिल्म मेकर के लिए भी, कि हम एक ऐसी फिल्म बनाए जो 5 लैंग्वेज में बने और उसका बिजनेस भी जो है 1000 करोड़ 1500 करोड़ तक हो। तब तो फिर डिबेट चेंज हो जाएगा या नहीं? डिबेट चेंज ही हो जाता है। तो ये डिबेट ऑफ द टाइम बोलते हैं उसको, कि कोई बंदा सक्सेसफुल है बोले ऐसा करना चाहिए, फिर दूसरा हुआ तो बोले ऐसे करना चाहिए। तो कभी लेफ्ट जीतता है, कभी राइट जीतता है। बात जीतने की है, बात मेरिट्स की है, मेरिट्स। और दूसरी बात, आपका एक और सवाल था, आपका क्या था वो? नहीं सर, आपने आपने आंसर कर लिया दैट द रियल टैलेंट ऑफ इंडिया इज इन ऑल्सो इन टियर 2, 3 एंड 4 सिटीज। दैट रियल टैलेंट वहां भी है। आप देखिए ना, आप देखिए कन्नड़ फिल्म जो बनी है KGF, कन्नड़ फिल्में, कन्नड़ प्रोड्यूसर हैं, कन्नड़ डायरेक्टर्स हैं, छोटी सी टेरिटरी है ऑल इंडिया लेवल, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन की, अपने रूट्स की पिक्चर बनाई है। एवरी फिल्म मेकर शुड मेक ए फिल्म where he has been born, where he knows the language in his own mother tongue, with his own people he has been brought up all these years. Then picture looks real. If I start making English films, I will be stupid. या मैं बंगाली फिल्म बनाने लग जाऊं तो भी खराब लगेगा, या साउथ इंडियन फिल्म बनाऊं। तो जिसकी जो लैंग्वेज है वो उसकी रूट से करेक्ट होना चाहिए। हम इंडियन हैं, इसलिए मैं हर बच्चों को कहता हूँ हमारे भारत के पास 15,000 कहानियां आज भी पड़ी हैं। उठाओ इनको और बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि हमारे पास उनसे बड़ी कहानियां हैं। दे आर कॉपिंग अवर स्टोरीज, हमारे शास्त्रों की कहानियां ले रहे हैं, हमारे रामायण महाभारत से उठा रहे हैं और हम उनकी कहानियां उठा रहे हैं। कभी कोरियन फिल्म ले रहे हैं, कभी वेस्टर्न फिल्म ले रहे हैं। वो गलत बात है। आप अपने आप पे अभिमान रखिए। भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल हेरिटेज है, काव्य का, ड्रामा का, नाट्य शास्त्र का। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। आप उन्हें उठाइए और जो आपकी लैंग्वेज है उसी में बनाइए। फिर आप देखिए कि आप पूरे विश्व के नहीं, ये बात जो आपने लास्ट में की सर, आपने बताया दैट जो अपनी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में आप फिल्म बनाइए, और वो लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेज जो है वो सबको, whether left hand wins or whether right hand wins, and the different languages of India will all represent India at the end of the day. तो भारत के लिए your heart should beat, and sir, that is the most important point that you made, sir. Let me ask you one final question from my end, and बाद में मैं अंत में, if there is time permitting, because there are 400-500 students who had joined us, so they were asking questions. So let me ask my final question to you. सर, इट्स लाइक अ स्मॉल रैपिड फायर। जो भी आपको पहले दिमाग में आता है, यू हैव टू से दैट फर्स्ट वर्ड, सर। सो इफ आई से मूवीज, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू सुभाष घाई जी's mind? larger than life. When I say India, sir, the most ancient cultured country. the most ancient culture. When I say youth, तभी sir, what's the first thing that comes to your mind? Discoverer. When I say role models, I dream to be like him. A dream. and sir, when I say I.I.M.U.N, sir, तो तभी आपके दिमाग में what's the first thing that comes? I.I.M.U.N is developing my personality and connecting the world youth. Connecting the world youth. Much for spending time. My grandfather used to tell me this, sir. Last line आपको खाली बताऊंगा। मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे कि आप ऋषभ पुस्तक तो ज्यादा नहीं पढ़ते हो, तो इंटेलिजेंट लोगों के साथ बातचीत किया करो, तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। So it's very nice talking to you, because it's a substitute to 100 books. If he was alive, I would have told him this. Whenever I met you, that time I used to tell him this, and he used to say that it's better than reading 100 books on cinema that you actually met him. So, and Subhash Ghai, sir, every man you meet is a book himself. Please understand that. Only thing you have to learn and pick up the best of things from the book. Thank you. Thank you. Absolutely. Thank you, sir. Thank you very much.